All right, we're here today for a very, very special training. And we have some really wonderful, successful people giving us the training today. Of course, you all know that the training is going to be done by Mr. Adam May and his wonderful wife, Claire Cotton May. Now, I'd like to give you a brief introduction on them. They are a wonderful couple. And in the marketing plan, they are Diamond Sapphire managers. Wow. They are also members of the esteemed, prestigious President Club. They are in the 100cc club. Wow. For those who don't know, the 100cc club simply means that you need to do an open house business, or in short, a business not from your other managerial lines, but from the lines that are not managers, and that is a qualification per month. So is that wonderful? 100 cc's per month? Yes. They have already earned well over $1 million. In fact, over the years, they've already earned over $3.5 million. Million pounds. I'm sorry. It's always the dollar that comes in, but it's over £1 million, 3.5 million pounds. They are the second top distributors in the UK, and UK, you know, is doing phenomenally well. They also have a huge international business. In fact, the countries they have visited with Forever Living are USA, Alaska, Hawaii, Canada, Mexico, Brazil, Iceland, Sweden, Denmark, Norway, Finland, Germany. I'm going to tell you all the countries, okay? Germany, Holland, France, Italy, Greece, Spain, Hungary, Romania, Turkey, South Africa, Zambia, Zimbabwe, Malaysia, Singapore, Thailand, Australia, New Zealand, and of course, is that enough? No, and of course, India. And let me tell you, India is one place that is very dear to Adam's heart, okay? That's something which he would tell you personally about. And of course, none the least, they are the area development directors for London. So they're in charge of London, of an area. In their downline, in their success line, they already have 1 double diamond manager, 2 diamond sapphires, 10 sapphire managers, and of course, plenty of soarings, senior managers, and managers. In all, over 10,000 active distributors worldwide. Is that great? Fantastic. How many would like a business like that? I know I would. Yes, all of us, right? So get your pens and papers together, get your catalogs out, and let's get set and get to our learning process from someone who's already done the business so successfully. And could we please give a huge, warm round of applause to Claire Cotton May and Mr. Adam May.
Mumbai. Mumbai. Well, good morning, everybody. Are you all recovered from the excitement of last night? What a fantastic rally. Claire and I were so moved by the Millionaires Club, by the profit-sharing checks, because over in the UK, I guess we can become a little bit blasé about how this business works. But when you come to a country like India and see the difference that the opportunity, literally rags to riches stories in India, it really touches up both of our hearts. Before we continue in English, we have a little surprise for you. ये हमारा सौभाग्य है है कि हमें भारत में ट्रेनिंग करने का अवसर मिला भारत वर्ष में हमें अपना एक्सपीरियंस शेयर करते हुए अपार हर्ष हो रहा है. I'm afraid that's as good as it gets. Sorry? Yeah, well, I don't think I'll try anymore because that's written down. So, what I'd like to do, though, is we're going to continue with our testimonial, but I'd like to bring on our translator for today so that you can all get my story, just in case anyone there can't understand it fully in English. So if I can ask you to give a big round of applause to Kamlesh Pansri, because he's going to be doing a very tough job today. Now, India is very close to my heart because my mother was born in Calcutta. Or Kolkata now, is it? Is that right? Kolkata? Yeah. And my father came here after World War II and met my mother, and my parents were married in Kolkata Cathedral. So this is the first time, I'm 47 years old, and this is the first time I've been back, or I've been to India. हेलो दोस्तों, इनका एक सौभाग्य है. ये एक नई बात बताई इन्होंने कि इनकी जो मदर हैं वो कलकत्ता से हैं. इनके फादर जो है सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद हिंदुस्तान में आए थे और यहाँ पे जो कलकत्ता का जो कैथेड्रल है, जो चर्च है, वहाँ पे उनकी शादी हुई थी. Okay. Yeah. So, I used to work in the financial markets in the city. And I had a successful career there for 7 years. So after leaving university, that's what I did. Then I decided to set up my own financial company with 2 other colleagues. And unfortunately, it was just after the crash of 1987. And at that time, it was a very bad time to be setting up a financial business. And unfortunately, after 2 years, the business went bust and I lost everything. इन्होंने जो है अपना करियर जो शुरू किया था वो फिनांस के क्षेत्र में किया था. क्षमा कीजिए, मेरे थोड़ा गला बैठा हुआ है, आपको मेरी ऐसी ही आवाज़ सुननी पड़ेगी आपको. फिनांस के क्षेत्र में किया था इन्होंने, और इन्होंने जो अपना करियर शुरू किया यूनिवर्सिटी के बाद जो है इन्होंने अपना जो समय जो है वो फिनांस के क्षेत्र में लगाया और अपने कुछ 2 दोस्तों के साथ इन्होंने एक कंपनी शुरू की. परंतु 1987
जैसे कि आपको पता है कि फिनांस क्षेत्र में एक बहुत बड़ा क्रैश आया था, ठीक है ना, एक रिसेशन आया था, तो वो सारा जो बिजनेस था उनका चौपट हो गया और ये जो है वहीं पे वापस जहाँ पे शुरू किया था वहाँ पे आ गए थे। That was when a friend showed me the forever opportunity. And I was highly skeptical. But because I had heard about network marketing before, or MLM before, and I'd been to look at other MLM companies. But all the companies I went to look at had promised that I would make quick money, that I would be a millionaire in 3 months. And I knew that couldn't possibly be true. इन्होंने जो है अपना जो FLP के बारे में जो इंट्रोडक्शन दिया किसी ने इनको, उससे पहले जो है इनके दिमाग में एक संशय था, इनका दिमाग बंद था MLM के बारे में। इन्होंने बहुत सी MLM कंपनीज के बारे में सुना था, उनके प्रोग्राम्स भी देखे थे, और वो कंपनियों ने इनको कहा था कि 3 महीने में आप मिलियनेयर बन सकते हैं। इस तरीके से इनकी ये धारणा थी FLP ज्वाइन करने से पहले। So I met a guy called Dusty Green, who was the managing director. He'd just come over from America to become the managing director of Europe. And I met him in London, and he told me that I would get wealthy. But he said it would take time, because to build a proper business in multi-level marketing, you cannot do it overnight. You have to be patient. इनको जो है डस्टी ग्रीन, जो कि अमेरिका से उसी समय आए थे और जो यूरोप में हमारे FLP में जो मैनेजिंग डायरेक्टर हैं, उनसे इनकी मुलाकात हुई। उन्होंने कहा आप मिलियनियर बन सकते हैं, पर उसमें समय लगेगा, ऐसा नहीं कि आप रातों रात मिलियनियर बन सकते हैं। और इस तरीके से उन्होंने कहा कि आपको FLP में समय लगाना पड़ेगा। So I signed up that very day, and I bought my box. And the thing that you should get from that is that although I'm successful now, I started in exactly the same way you all started, by filling in a form and buying my box. इन्होंने उसी दिन फॉर्म साइन किया, अपना जो है कॉम्बो बॉक्स जो भी वहाँ पे सिस्टम था उसको खरीदा, क्वालिफाई किया, और ये बताना चाहते हैं कि इनकी जो शुरुआत थी वो बिल्कुल एग्जैक्टली वैसे ही है जैसे कि आप लोग हो सकता है आज की डेट में हो। उन्होंने भी ऐसे शुरू किया था, फॉर्म भरा था, उनकी भी स्थिति वैसी ही थी जैसे कि आज ये बहुत सक्सेसफुल हैं, परंतु उस टाइम पे उनकी स्थिति बिल्कुल एक नए डिस्ट्रीब्यूटर की तरह ही थी। In other words, the only difference between you all and me is what? Time. Exactly. I've just been doing it for 15 years. It will be my 15th birthday in forever on the 17th of August this year. इनमें और आप में जो डिफरेंस है, जो आज की डेट में ये आप देख रहे हैं कि बहुत सक्सेसफुल हैं, जैसे इनका आपने बैकग्राउंड देखा है, सिर्फ जो डिफरेंस है वो समय का डिफरेंस है। इन्होंने जो है अपने जीवन के 15 वर्ष फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट्स को समझने में, उसको करने में लगाए हैं, और ये 17 अगस्त को अपने 15 साल पूरे कर चुके होंगे। I need to ask you a question. Do you want me to be honest with you about my experience in the business? यस, आप बिल्कुल ऑनेस्ट हैं इस बिजनेस करने में? प्लीज वंस अगेन, प्लीज विद लाउड। Okay. In a year's time, in 1 year's time, half the people in this room will no longer be doing forever. का कहना है कि हो सकता है कि इसमें से आधे लोग 1 साल बाद फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट्स नहीं कर रहे होंगे। It's true. And you know what? You may be sitting there now thinking it won't be me, but I guarantee each and every one of you that at least once in the next year you will want to quit. ये भी हो सकता है, ये आपसे ही प्रश्न पूछ रहे हैं, ये हो सकता है 1 साल के बाद ऐसी धारणा भी हो आप लोगों की
कि आप FLP छोड़ने की सोच रहे हो, And half of you will quit. और यह भी हो सकता है कि आधे आप में से आधे लोग छोड़ दें। And I'm here to tell you that if you quit, that would be a huge shame. और अगर आप छोड़ते हैं तो उससे शर्मनाक बात और कोई नहीं हो सकती। It won't matter to me. It won't matter to Amajit. It won't matter to Rex. But it will matter to you and your family's future. ये जो है आपके इंटरेस्ट में है, ये जो है आपको सोचना है। ऐसा नहीं है कि मिस्टर रेक्स मॉन इसमें इंटरेस्टेड है या उनकी वो ऐसा सोचते हैं या मिस्टर एडम सोचते हैं या मिस्टर अमरजी सोचते हैं। ये आपको सोचना है, अपने परिवार के बारे में सोचना है कि आप ये सारे जो डिसीजंस हैं, इन्होंने क्वेश्चंस किए हैं कि आप क्या 1 साल बाद छोड़ देंगे या 1 साल बाद छोड़ने की सोच रहे होंगे, ये आपको सोचना है सब कुछ। Because you will never in your life again find an opportunity that can change your life the way Forever has changed mine. Clap, you can clap for this, please. अगर आप ऐसा सोचते हैं छोड़ने की, तो आप एक बहुत बड़ा अपने आप का अपना नुकसान कर रहे होंगे, क्योंकि अगर आप FLP करते हैं जैसे कि इन्होंने किया है, तो वो सिर्फ आपकी लाइफ चेंज नहीं करेगी, एक नई जीवन धारा शुरू हो जाएगी आपके जीवन में। Some of you may quit Forever and say that the company doesn't work. Some of you may quit Forever and say that the products don't work. Some of you may quit Forever and say that the marketing plan doesn't work. Some of you may quit Forever and go to another MLM company because you will say the grass is always greener on the other side of the fence. आप में से कुछ लोग इसलिए छोड़ दें ये सोच के कि कंपनी काम नहीं करती है, कंपनी ठीक नहीं है। कुछ इसलिए छोड़ दें कि प्रोडक्ट्स काम नहीं करते हैं, प्रोडक्ट्स इफेक्टिव नहीं है, या यहाँ का जो मार्केटिंग प्लान है वो इतना पैसा नहीं देता है, या ये छोड़ दें इसलिए छोड़ दें कि दूसरी MLM कंपनीज की तरफ आप आकर्षित होते हैं। क्योंकि होता है ऐसा, देखते हैं कि भाई जो दूसरी तरफ की जो कहते हैं कि जो है दूर के ढोल सुहावने होते हैं। You will want to point your finger in every single place except one. आप जो है उंगली उठाएंगे सब तरफ सिर्फ एक जगह छोड़ के, और वो कौन सी जगह है? But when you point the finger at something or someone else, there are 3 fingers pointing back at you. Yes. जब आप किसी की तरफ उंगली उठा रहे होते हैं तो ये जो 3 उंगलियां होती हैं वो आपकी तरफ इशारा कर रही होती हैं कि दोष जो है वो आप में है। And in my experience, the people who quit are the people who don't look in the mirror. अक्सर वही लोग छोड़ते हैं जो अपने आप को पहचान नहीं पाते हैं। I am incredibly proud to have been invited to speak to you here today, and I hope to be able to share with you many of the experience or much of the experience that I've gathered over the last 15 years in Forever. मेरा ये बहुत सौभाग्य है कि मैं हिंदुस्तान में आया हूँ और यहाँ पे जो 15 लंबे वर्षों में जो मैंने अपना जो एक्सपीरियंस जो है, मैंने अपना जो तजुर्बा हासिल किया है, उसको आपके साथ शेयर करने का मुझे मौका मिला है। And what I've brought with me is one of the trainings that has become crucial in helping to build the UK. इन्होंने जो है ट्रेनिंग जो आज की ट्रेनिंग है विशेष रूप से बड़ी क्रूशियल ट्रेनिंग है जिसकी बात कर रहे हैं, और ये जो है यूके में इन्होंने सक्सेसफुली की है, जिसको हम शेयर करेंगे यहाँ पे आपके साथ। And it's
there's a little bit in there about the products and a little bit about retailing, but it's mainly about building a team, about building a network, because that is the thing that will give you and your family security, whether you get ill, whether you get old, and unfortunately we all get old, Yes. whether you want to retire. A network, a team, will give you an income every single month for the rest of your life. How does that sound? यस, इसमें हम थोड़ी प्रोडक्ट्स की बात करेंगे, थोड़े मार्केटिंग प्लान की बात करेंगे, पर जो विशेष रूप से हमारा फोकस रहेगा, जो आपकी ट्रेनिंग के ऊपर रहेगा आज की, वो रहेगा एक टीम को बिल्ड करना, कि आपकी जो है टीम एक मजबूत टीम हो, जैसे कि मिस्टर मे की है। ये टीम जो है वो आपके लिए एक पेंशन प्लान होगी, एक हमेशा एक सपोर्ट रहेगा, चाहे आप बीमार हो जाएं, चाहे बूढ़े हो जाएं, हम सभी ने बूढ़ा होना है, और जो है ये हर महीने जो है आपको आपका जो नेटवर्क है वो एक अच्छा खासा पैसा देता रहेगा। You know, retailing is a very important part of what we do. All of us leaders in the UK have customers that we sell the products to. But what a retailing business can't give you is security. Because if you get sick and you can't supply your customers with products, your income dies like that. रिटेलिंग जो है वो बहुत महत्वपूर्ण है फॉर एवर लिविंग प्रोडक्ट्स में, कस्टमर्स को सप्लाई करना, उनको टाइम पे सामान पहुंचाना, परंतु जो रिटेलिंग है वो आपको एक लंबे समय तक की सिक्योरिटी नहीं दे सकती। जैसे फॉर एग्जांपल उन्होंने बताया कि आपकी तबीयत ठीक नहीं है, उस दौरान अगर आप रिटेलिंग नहीं कर पा रहे हैं तो आपकी कोई इनकम नहीं होगी। People I know may build big retail businesses, but they forget that our business is very different, almost completely opposite to traditional business. कुछ लोग जो है बहुत बड़े वॉल्यूम में रिटेलिंग करते हैं, परंतु वो भूल जाते हैं कि जो हमारा बिजनेस है, फॉर एवर लिविंग प्रोडक्ट्स का जो बिजनेस है वो ट्रेडिशनल बिजनेस से अलग है, उसके विपरीत है। Let me explain what I mean. A traditional business is about a small team, maybe a small sales team, who are trying to generate hundreds of thousands, lakhs, and what's the other thing? Crores. Lakhs and crores, generate many lakhs and crores worth of sales into a marketplace. जो ट्रेडिशनल बिजनेस है वो इस तरीके से होता है कि जो एक कंपनी है या जो एक ऑर्गेनाइजेशन है वो बहुत से लोगों को, लाखों लोगों को, करोड़ों लोगों को जो है अपने उत्पाद बेचता है और इस तरीके से पैसा कमाता है। Or you could turn that round. That could be a retail business, maybe where you have a premises like a shop or a supermarket or a restaurant or a cafe, at which point you're attracting people in from your chosen business. इसके विपरीत ये भी हो सकता है कि जैसे आपका मॉल हो या बहुत बड़ी शॉप हो जहाँ पे आप सब लोगों को अट्रैक्ट करते हैं और लोग आपके पास आके सामान लेते हैं। But the key feature of a traditional business is that it's about a few people doing a lot. जो सबसे बड़ा जो फीचर होता है जो ट्रेडिशनल बिजनेस का वो ये होता है कि बहुत थोड़े से लोग जो है बहुत सारा काम कर रहे होते हैं। Now our business is very different because what we do is we help people to become independent distributors. That's me and you. We're this little blue dot. We're an independent distributor. परंतु हमारा बिजनेस है वो बिल्कुल अलग है, हम एक इंडिपेंडेंट डिस्ट्रीब्यूटर की तरह होते हैं, जैसे कि डॉट है, इंडिपेंडेंट है ये। Then we help people to develop, let's say 20 or so customers. In the UK, we work on helping a new person to develop 20 drinks customers who are buying on average 2 bottles a month each for them and their family, which means we help a new person build a 4-case credit retail business because, of course,
40 drinks is 4 case credits. यूके में किस तरीके से बिजनेस डेवलप करते हैं कि जैसे इनका कोई नया डिस्ट्रीब्यूटर होता है उसको जो है ये हेल्प करते हैं कि 20 नए कस्टमर ढूंढे, वो उसमें हेल्प की जाती है अपलाइन की तरफ से कि वो 20 कस्टमर ढूंढे और हर कस्टमर जो है वो कम से कम 2 बोतल एलोवेरा जेल की यहाँ से ले। इस तरीके से देखा जाता है कि वो जो नया डिस्ट्रीब्यूटर है वो करीब करीब 4 सीसी कर रहा होता है। And the reason we concentrate on the drinks to start with is because they're the products we found that make the most impact on people's health. ये जो ड्रिंक्स हैं, जो एलोवेरा है, उससे ही ये शुरुआत क्यों करते हैं? क्योंकि जो उसका असर होता है वो देखा गया है कि सबसे प्रभावशाली होता है। But of course, once somebody's getting health benefits from the drinks, then we can sell them more of our products. अगर किसी को हेल्थ बेनिफिट्स होते हैं, उसका स्वास्थ्य अच्छा होता है, तो हम ज़्यादा प्रोडक्ट बेच सकते हैं। So very often somebody will end up with their 20 customers not selling 4 case credits, but maybe selling 5 or 6 or 7 or 8 case credits, all to the same small customer base. तो ये जो 20 कस्टमर हैं जो हमने ढूंढे हैं, उसी कस्टमर में हम देखते हैं कि ये जो केस क्रेडिट है वो बढ़ते जाते हैं, कभी 4 भी हो जाते हैं, 5 भी हो जाते हैं, कई बार 8 भी हो जाते हैं। So we help somebody to become a distributor, we help them to develop 20 customers, then we help them to find other people who want to make money and help them to develop their 20 customers. Then we help them to find people who want to make money and help them to develop their 20 customers, and so on. And what actually happens over time is that we end up with the same kind of market coverage as the traditional business model. इस तरीके से आपने देखा है कि ये जो 20 कस्टमर्स हैं, उन्हीं में हम देखते हैं कि उन लोगों को ढूंढते हैं जो कि पैसा कमाना चाहते हैं, पैसा बनाना चाहते हैं, और उनकी भी हेल्प की जाती है कि वो भी 20 कस्टमर ढूंढे और वो भी 20 कस्टमर्स में से उन लोगों को ढूंढे जो कि पैसा कमाना चाहते हैं। इस तरीके से आप देखते हैं कि नेटवर्क वैसे ही फैल जाता है जैसे कि ट्रेडिशनल बिजनेस में आपने ऊपर वाली फिगर में आप देख रहे हैं। But of course, there's some major advantages with our model. There's a big difference as well. And the big difference is that a traditional business is about a few people doing a lot, whereas our business is about a lot of people doing a Small. little. Can everyone see that? तो इनका बताने का ये जो इन्होंने प्रैक्टिकली ये बताया है कि ट्रेडिशनल बिजनेस में थोड़े से लोग ज़्यादा काम करते हैं, परंतु हमारा बिजनेस उल्टा क्यों है, विपरीत क्यों है? क्योंकि आप नीचे की अगर फिगर देखें तो इसमें बहुत सारे लोग हैं जो कि थोड़ा थोड़ा काम कर रहे हैं। But there are also some major advantages with our business model compared to a traditional business model. And the first advantage, of course, is to the customer. Because the customers get both a personal service, because they are our customers, and they get an excellent service. Because I would hope none of us are stupid enough to not look after our customers properly. यस, जो सबसे बड़ा डिफरेंस है, जो हमारे एडवांटेज की बात करें, अगर क्यों हमारे बिजनेस ये ट्रेडिशनल बिजनेस से हमारा बिजनेस क्यों सशक्त है, ज़्यादा मजबूत है, क्योंकि यहाँ पे जो हमारे कस्टमर्स हैं उनकी हम एक पर्सनल सर्विस देते हैं, उनको जो है एक एक्सीलेंट सर्विस देते हैं। और कौन ऐसा बेवकूफ़ होगा जो कि अपने कस्टमर्स को अच्छी सर्विस नहीं देगा? But there are also advantages in this model to the company. And the main one of that is service. Because what is one of the things that can ruin a company's reputation overnight? Bad service. Has anyone here ever had a bad service experience in a shop or a restaurant or with their phone company or their water company or their gas company? Exactly. यस, दूसरा जो मेजर एडवांटेज है यहाँ पे वो है रेपुटेशन का। जब हम सर्विस देते हैं तो हम अपनी कंपनी की एक रेपुटेशन जो है वो भी हमारे पीछे होती है। क्योंकि आपने देखा है कि ट्रेडिशनली आपको बहुत सी ऐसी कंपनी है जहाँ से शिकायत होती है, जैसे गैस कंपनी है या कोई पेट्रोल कंपनी है या कहीं पे कुछ शॉप में आपको शिकायत रहती है, परंतु यहाँ पे जो है इस तरह के बिजनेस में ये एडवांटेज है कि हमारी कंपनी जो है उसकी एक रेपुटेशन बनती है और हमको कोई शिकायत नहीं मिलती है। And of course, if you get bad service, you never go back. But because we look after our customers, it enhances Forever's reputation. It makes
Forever's reputation better. तो आपने देखा है कि जब भी आपको कुछ बैड सर्विस मिलती है, कहीं पे आपको इस तरह का कोई एक्सपीरियंस होता है, तो आप उस शॉप में नहीं जाते हैं, वो काम नहीं करते हैं। परंतु जो आपके कस्टमर हैं, उनको आप एक अच्छी सर्विस दे रहे हैं। इस तरीके से जो है आपके कस्टमर जो है आपका बिजनेस बढ़ाते रहते हैं। But it's also good for the company and for us in terms of marketing. Now, has anyone here ever done a course in marketing, in traditional